देखिए, जिस तरह से केंद्र आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, झूठे मामले दर्ज कर रही है, वो चाहती है आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री, हर नेता को गिरफ्तार कर ले। तो हम मोदी जी के पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार करिए। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं। आप हमें खत्म कर दीजिए, पूरी पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए। पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं, कि अच्छे अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। देखिए, पुलिस जिस तरीके से डंडे मार रही है, हमारे एक पार्षद का गला पकड़ के पुलिस वाले ने पीछे धकेल दिया, ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। ऐसा देश की राजधानी में हो रहा है तो आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उससे भी हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे 144 धारा लगाई गई है, पूरी तरीके से गलत है, ताना चाहिए। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट के पास 5 रास्ते हैं। आप उन्हें कनॉट प्लेस से ले जाइए, आप उन्हें पीछे दिल्ली गेट से ले जाइए। ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट का रास्ता नहीं है, इसके अलावा 5 और रास्ते भी हैं। देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फर्जी मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया है, हम सारे लोग यहाँ हथकड़ी लगा के इसलिए हम कहते हैं कि हम सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लो। जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सारे लोग क्या कहते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक साथ ही आप बंद कर दो, जेल में खत्म करो आम आदमी पार्टी। ये लोग अडानी से दोस्ती करते हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर, नेताओं पर मुकदमा लिखाते हैं। जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को भविष्य को सुधारा है, उसको आप जेल भेज रहे हो, और अडानी से आपकी दोस्ती है। निहायत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतरी है। आप देखिए, पूरी पार्टी को किले के रूप में तब्दील कर दिया है। हमारे विधायकों को घसीट रहे हैं, पार्षदों को पीट रहे हैं। यह तानाशाही है, लोकतंत्र के लिए काला दिन है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। आप लोग यहाँ पे पुलिस हटा रही है, आगे क्या? देखिए, हम यहाँ डटे रहेंगे। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए हैं। इन जालिमों से डरने वाले नहीं हैं, इनकी तानाशाही से झुकने वाले नहीं हैं। ये मोदी ये अडानी के दलाल हैं, और हम लोग सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र करें, सभी साथियों से अनुरोध है कि आगे से बैरिकेड की तरफ है, सभी साथियों से अनुरोध है आगे की तरफ है। Quarters. This is the DDU Marg, and usually this is a busy stretch of land, and in the sense that there's a lot of traffic on this stretch of road. Look at what's happening right now. These are workers of the Aam Aadmi Party. Many of them have actually stopped right at the tracks because they don't want, in fact, the RAF to take any sort of action vis-a-vis using water cannons, and they're backing off to an extent. But I'm going to go straight across to Aishwarya to get a sense of what does it really look like as far as the confrontation is concerned. Aishwarya, just tell us what's going on right now. There's a confrontation, Sneha, at the moment is taking place. The Delhi police personnel, the RAF, the CRP, very, very clear. They don't want the protesters to be able to breach the barricades, which is what we are seeing over the past 15 minutes. The protesters trying very hard to reach. The protesters are trying very hard to reach the barricades. But there is a circle of sorts which has been made by the RAF and the Delhi police personnel, and they are containing the protesters right outside the Aam Aadmi Party headquarters, not being able, the protesters trying very hard, still not being able to reach the barricades. And police personnel present at the barricades also in large numbers. So the idea there is very clear. Forget about reaching the BJP headquarters. The first layer of barricade is also seems like out of bounds for the protesters. The RAF now moving in and has encircled all the protesters. Heavy sloganeering taking place. Protesters trying very hard to push across, to push through the layers of RAF personnel that you see. An announcement also being made at the moment, Sneha, the Delhi police personnel giving a very stern warning to the protesters, asking them not to indulge in a scuffle. Action will be taken against those protesters who will be caught.
trying to break through this circle, this barricade of Delhi police personnel. More police personnel, let me tell you, Sneha, I'll just show you the visuals. More police personnel now on their way. All of them are making way to the barricades. More police force being called in. So definitely, Sneha, this is the Lakshman Rekha that has been drawn by the administration, the police personnel, making sure that even the first layer of barricades is completely out of bounds for the protesters. There's a heavy scuffle that is taking place between the protesters and the Delhi police personnel, the RAF team that is present on the spot. The number of police personnel present is swelling by the minute. The idea is for the protesters to not let the protesters reach the first layer of barricades. We are showing you visuals on India Today of exactly what's taking place very close to the Aam Aadmi Party headquarters. The entire stretch has been shut off from both the ends. This is the DDU mark, Deen Dayal Upadhyay mark. And the protesters sloganeering, trying their level best to break through the barricades that have been put up. But they have been encircled by the RAF, the CRP and the Delhi police personnel. Sneha. And all of this, always, and this is what the AAP says, that this is, they're targeting us because we are in fact formidable opposition to the BJP, is what the AAP says. As far as the morale of the party is concerned, given that Manish Sisodia is not the only minister to be arrested, there are others as well who face the wrath of investigating agencies in various cases. The morale of the party workers seems to be fairly high. At least that is what the AAP today, Aishwarya, is trying to portray, isn't it? Well, definitely the Aam Aadmi Party is trying to portray that, these kind of tactics that have been used. That's what the Aam Aadmi Party at the moment is claiming, that this is a tactic. Using the CBI to arrest Manish Sisodia is a tactic of the Bharatiya Janata Party. This is what the Aam Aadmi Party is at the moment trying to say, and that's what we are even seeing in the kind of sloganeering that is being done by the protesters. Protesters now trying to make sure that somehow they break through the circle that has been made by the RAF, the CRPF and the Delhi police personnel, not being able to do so. They have been contained, Sneha. The protesters who are sloganeering, who are chanting, leaders like Sanjay Singh also present amongst the protesters, all of them have been contained in one spot. The police personnel very clear that they will not be able to breach, let alone breach, they will not be able to even reach the first layer of barricading that has been done, and all this is taking place barely 100 meters away from the Bharatiya Janata Party's headquarters here on the DGU mark. The Aam Aadmi Party, the protesters sloganeering against Bharatiya Janata Party and also sloganeering against the CBI and saying that Manish Sisodia, the Education Minister of Delhi, is someone who would have never indulged in corruption, something that the CBI at the moment is claiming.